नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो के साथ एक खास मुलाकात। यस, यू आर एक्साइटेड, सो एम आई। लेकिन इस एक्साइटमेंट को आपके साथ शेयर करूं उससे पहले ये बता दूं कि पूरे साल में जो मेरी सबसे एक्साइटिंग जर्नी होती है, जिसका मैं पिछले 11 साल से लगातार हर साल इंतजार करता हूं और अब 12वें का भी है, वो है यस द ड्राइव टू डिस्कवर। सो आई डिस्कवर माई सेल्फ इन दिस ड्राइव एंड you are going to discover a lot about Honda, not just the products but the planning also. क्यों कह रहा हूँ ऐसा? क्योंकि आज हमारे साथ में एक बड़े स्पेशल गेस्ट भी है। जी हाँ, हमारे साथ इस वक्त वीपी मार्केटिंग एंड सेल्स Honda कार इंडिया कुणाल बहल जी मौजूद है। कुणाल सर, सो नाइस ऑफ यू एंड इट्स एक्साइटिंग। ये हर बार जो तैयारी होती है ना, जो ड्राइव टू डिस्कवर में हम खुद को जानते हैं और Honda के साथ जो हमारी ट्यूनिंग होती है उसमें मजा आ जाता है। एंड especially the fact that this time it is from Bangalore, which makes it more exciting. बहुत कुछ है लेकिन सर जो कि और भी जानना है. So how about we go for this, discover a lot about the product and the company. Let's do that. Sure. Thank you, sir. You have been spearheading the sedan segment. सब कॉम्पैक्ट SUVs इन्होंने ना पूरे का पूरे बॉडी शेप को बदल के रख दिया, लेकिन वो जो ऑथेंटिक, वो जो सेडान शेप है ना, उसको स्पीयरहेड और उसको बचा के जो मार्केट में रखा है, दैट इज Honda एंड ऑल हैट्स ऑफ टू द सिटी. एंड नाउ द नेक्स्ट स्टेज, द हाइब्रिड EHEV जो दिख रही है. तो क्या आपको मोमेंटम किस तरफ जाता हुआ लग रहा है? क्योंकि प्लानिंग एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है और EHEV जब आई बाजार में तब हाइब्रिड का एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को समझ भी आया. हाउ इज द रेस्पॉन्स दैट यू सी फॉर दिस एंड दिस रेस्पॉन्स दैट यू गॉट विद दिस हाइब्रिड, what it means for the next 5 years? So hybrid, is a very innovative technology in the Indian auto car industry. So you're right. बहुत बड़ा mix है कि लोग have shifted towards and their preference is more towards the SUV body shape. But yes, there's a huge chunk of customers who love the sedans and they have a huge confidence on the Honda's sedan, which we have been very strong in the segment. City EHEV, which is the hybrid, is definitely a very important and a very innovative technological launch which we've done. Not just the exhilarating performance which you get on the road, but also you have a very worry-free drive, as compared to electric vehicles where you have to see how far can I go. You do not carry that anxiety with you when you're driving the car. So it gives you a super industry best in the class segment mileage, which of course you need in today's time. And most importantly, City HEV has a very strong feature of Honda sensing. By Honda sensing, I mean it is basically safety at its supremacy. So you have a huge set of safety features which are attached. And as far as the response in the market is concerned, we are very happy. We have about 9 months of booking as of now. Wow. Yeah, of course, because of chip supplies, we're sorry we're not being able to supply and meet that demand at the moment. But I think I'm sure with time it gets better. So yeah, that's all. Honda ब्रांड की जब बात होती है तो अलग से एक मुस्कान आती है. तो सारे कस्टमर्स इस वक्त जानना चाहते हैं और वो जो Honda ब्रांड के लॉयल, क्योंकि मेरे कई सारे दोस्त हैं वो 5th जनरेशन से वो सिटी का इस्तेमाल कर रहे होंगे. तो बड़ा समय बदल रहा है, बॉडी शेप भी बदल रही हैं, तो उनकी तमन्नाएं भी ज़्यादा हो जाती हैं. तो वो जो कस्टमर्स सुन रहे हैं, तो आज ना उनके लिए आप ना कुछ खुलासा इस ड्राइव टू डिस्कवर के दौरान कर ही दीजिए. लेट देम डिस्कवर समथिंग दैट दे कैन ड्राइव नेक्स्ट ईयर. So Honda, first of all, is known for the durability, quality, and reliability in the Indian segment car industry, and all customers, they have loved the brand for it. So yes, we've been very strong in the sedans, but we've also realized that we need to be there in the SUV body shell, which is currently missing as of now. So Honda, we have prepared globally India designed SUV, which is specifically made for the Indian markets and Indian roads. We should be coming up with this model the next year. And when I say India designed SUV, we have seen what kind of requirements are there from an SUV perspective from the customers. And we have tried to incorporate all those requirements in the new model.
and I'm sure it's going to give a very exhilarating driving experience to all the customers who've been waiting Honda to come into this segment. वैसे क्या आप ये बता सकते हैं किस क्वार्टर में आपकी ये गाड़ी बाजार में आ सकती है, ताकि उस हिसाब से बजटिंग हो जाएगी ना? It should be before the festival period is all I can say as of now. चलिए, मतलब अगले फेस्टिवल सीजन पे आपकी गाड़ी बदल सकती है, और अगर आप होंडा की गाड़ी चाहते हैं और एसयूवी बॉडी शेप में चाहते हैं तो देखिए, खबर हमने आपको दे दी, अब उसका इस्तेमाल कैसे करना है वो आपके ऊपर है. As Honda is known for step by step process, hybrid is there. Right. So I believe the next step would be electric. तो Yes. उसमें वो नेक्स्ट स्टेप लेने में कितना टाइम लगेगा? So globally, Honda global CEO Mr. Nive, he made an announcement that by the year 2030, 2/3 of our global sales will be electrified. So when I say that, that's a combination of the battery electric vehicles and the fuel cell vehicles. Right. Now, which means that we should be investing about $40 billion in this investment, and we should be coming up with 30 EVs. And by the year 2030 globally जो Honda की sales होगी वो about 2 million sales होगी per year in terms of purely electrified cars. Now we are also a part of that global company, a parent company is Honda Motors Japan, so we are a part of it. So I'm sure we come up with some exciting EV model for the Indian market as well. But I think that needs a little bit more of time in the sense to decide which segment and what kind of car is needed for the Indian specific road conditions. Kunal sir, don't you think the plan is absolutely in place? People have confidence. 2030 is by 2030 everything will be set. But where is the start? Because बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स अभी मैदान में हैं, अपनी गाड़ियों को बेच रहे हैं. टाटा, महिंद्रा, मारुति is going to be next, Hyundai is going to be the next. ऐसा तो नहीं होगा कि that you will miss the bus if it's too late and you concentrate on hybrid and not focus on electric right away and make it available to the customer by 2024 or maybe early 2025? Yeah, so as I said, we are very carefully watching the industry. So, but we also feel currently the kind of infrastructure requirement is required for EV is still not there in the Indian market. So it needs some time to graduate and evaluate. So we are evaluating the market. So I'm sure we would not miss the bus, as is rightly said. So a strong hybrid is the best solution, is what we believe in today's situation. And I'm sure with the launch of other competition models also in this segment, people will learn more. Yeah, so the awareness of the strong hybrid, पहले तो लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो strong hybrid क्या है, mild hybrid क्या है. So जैसे जैसे उसकी knowledge awareness बढ़ेगी, I'm sure customers will try to adapt to this solution. And let's not forget one more thing, the taxation structure of the hybrid is very different from a battery electric vehicle taxation structure. So tax what you have to pay on a battery electric vehicle is just 5%, whereas hybrid के ऊपर वो tax 43% है. Exactly. Right. So there's a big difference between the taxes on both the models. So I am not too sure how long this kind of a cap would be sustainable by the government, and I'm sure the government would consider that the hybrid is also a very good solution to conserve on the fuel. सर, ये महंगी और उसका तो बातें चलती रहेंगी, but this route that we have taken, it's full of greenery. Yeah, it's clean green nature that we are talking about, and I know it's in the core DNA of Honda, right, to keep the mother nature alive as much as possible for our future kids also. right. और फ्यूचर की जब बात होती है तब सेफ्टी भी बहुत बड़ा मुद्दा है. इस सेफ्टी को लेकर आजकल कई सारी बातें हो रही हैं, राइट? एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है सेफ्टी. होंडा का स्टैंड क्या है, और जो आपकी सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज या कॉम्पैक्ट एसयूवीज जो बाजार में नजर आएंगी, वैसे सब कॉम्पैक्ट होगी, कॉम्पैक्ट होगी? आपको वेट करना पड़ेगा फेस्टिवल पीरियड के लिए. यस. फिलहाल से सेफ्टी के मुद्दे पे हम बात करें तो सेफ्टी के लिहाज से होंडा की गाड़ी अब आगे किस तरफ जा रही है? So safety is definitely a very serious issue, and one has to very seriously consider this topic. And Honda has always been on the forefront of making safer cars for the consumers. Honda Sensing जो हम अभी hybrid में लेके आए हैं, वो एक first step है to make the cars more safer. So the Honda Sensing has 5 main features. You have the
collision mitigation braking system. Yes. जब आपको लगे कुछ गाड़ी जो आप ध्यान आपका गाड़ी से हट जाता है और सडन कुछ सामने आ जाता है, automatically the car tries to reduce the speed and brake. Then you also have adaptive cruise control, you have a lane watch camera. So you know there's so many features which we are trying to put in the Honda sensing. Going forward, we of course launched this with the Honda City EHEV. I'm sure in the coming models we will try and incorporate this technology so that the cars are made more safer on the road. जब चीज़ें सही नहीं जा रही होती ना तो लोगों के मन में सवाल बहुत होते हैं, राइट? और वो सवालों का जवाब, जैसे आप इस वक्त मुस्कान और आपकी कॉन्फिडेंस दिख रही है, ये शायद सही समय है कि आप अपने डीलर पार्टनर्स, ठीक है, आपके जो कस्टमर्स हैं, जो ब्रांड लॉयल हैं, उनको, क्योंकि सवाल है और सवालों के लिए जवाब लोग ढूंढते हैं, तो लॉन्ग टर्म स्टे को लेकर भी ना कई सारे सवाल थे जो एक अजीब सी जिज्ञासा है। वो मैं मानता हूँ कि आपके 2030 का प्लानिंग सुनकर और जिस तरह की इन्वेस्टमेंट होंडा जापान कर रही है, जिस तरीके का फ्यूचर इलेक्ट्रिक पर दिख रहा है, फोकस दिख रहा है और सीडी हाइब्रिड से हम चढ़ते जा रहे हैं, लोगों को बात क्लियर हो चुकी है। और अगले साल आपने ये भी बता दिया कि हम कॉम्पैक्ट एसयूवी में भी आ रहे हैं। लेकिन फिर भी जो ये सवाल पूछ रहे हैं, उनको अगर आप एक सीधा जवाब देना चाहें तो वो क्या जवाब होगा अबाउट द लॉन्ग टर्म स्टे ऑफ होंडा इन इंडिया? India is a very important market for us. पूरे विश्व भर में इंडिया 4th largest market है, and ऐसी market we cannot afford to ignore this market. Exactly. So we very much focused on India market. So मैंने ऐसे बोला global SUV जो हम लेके आ रहे हैं वो Indian specific conditions के लिए बनाई गई है. We are very much focused for the Indian market and we value the Indian customers a lot. The years going ahead will be very exciting. We are trying to enter into new segment of SUV as I said. डीलरशिप नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी ना इस वक्त होंडा की कवायद जो नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी है, कैसे, ये भी बता दीजिए कुणाल सर। So dealerships, we are trying to completely change the exterior and the interior look of the showrooms and the Right. workshops. ओके, तो सभी डीलरशिप्स का इस वक्त पूरा Yes, बिल्कुल. So वो शुरू हो चुका, पायलट वो शुरू हो चुका है एंड अभी 100 आउटलेट्स हम पहले कवर कर चुके हैं. Okay. देश भर में we have about 330 outlets in about 242 cities and we are trying to adopt to a new corporate identity. जो एक्सटीरियर्स हैं वो बहुत ही अच्छा कलर कॉम्बिनेशन के साथ हम लेके आ रहे हैं एंड इंटीरियर्स आर वेरी वेलकमिंग once we enter the showroom and not just the showroom but also the workshops. You will find a very different experience. सर ये बहुत मतलब पूरा नेटवर्क को चेंज करना, इसमें भी काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगी। Right. तो इसमें पूरी की पूरी हिस्सेदारी डीलर्स की तरफ से जा रही है या कंपनी और डीलर्स मिलके इस पर काम करेंगे? कंपनी और डीलर्स हम लोग मिलके Okay. ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. तो अभी आने वाले टाइम में वी शैल बी स्पेंडिंग अबाउट 260 crores to develop and revamp the overall infrastructure of the dealership network. So आप प्लीज अपने नियरेस्ट होंडा शोरूम जाएं and I'm sure you would love the new corporate entity which we have followed now. शेयर कीजिएगा अगर आपके पास होंडा की डीलरशिप है, तो ये जो बदलाव आपको दिख रहे हैं ना होंडा की डीलरशिप में, ये बदलाव अच्छे हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताइएगा। इवन वी आर एक्साइटेड टू नो, और हम इन डीलरशिप का खुद भी जायजा लेंगे और अपनी राय भी हम आपके साथ बहुत जल्द इस पर शेयर करेंगे। और जितने भी सिटी के चाहने वाले हैं और जिन्होंने भी ये चीज का इस्तेमाल भी किया है और होंडा के पोर्टफोलियो में इस वक्त जो बाकी प्रोडक्ट मौजूद हैं, खासकर सब 4 मीटर सेगमेंट की मेरी जो फेवरेट है अमेज, वो सभी दर्शक, या आप होंडा के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, फील फ्री कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर जरूर बताइएगा। लाइक शेयर करिएगा, क्योंकि आपका प्यार हमारे लिए बहुत जरूरी है और वो आपका प्यार ही है जिसकी वजह से हम आगे जा रहे हैं और हमारी फैमिली आगे बढ़ रही है। और ये फैमिली ऐसे बढ़ती रहे, इसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू टेल अस दैट हाउ डू यू लाइक दिस स्पेशल एपिसोड ऑफ अस विद कुणाल बहल, VP सेल्स एंड मार्केटिंग, होंडा खास इंडिया।